हैरानी की बात नहीं है, टीम इंडिया की सीरीज़ हार के बाद प्रेस के सामने फेस करने के लिए राहुल द्रविड़ आए, जो उनकी आदत है। जब टीम जीतती है तो कप्तान या खिलाड़ी आता है, लेकिन हारती है तो कोच आते हैं। कोच की तमाम बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन पूरे वीडियो आपको देखना है, क्योंकि आपको राहुल द्रविड़ ने हिंट दिया है कि एशिया कप में कौन वापस आ रहा है, प्लस वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे चल रही है और इस हार का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम मुद्दे। तो दोस्तों, मेरी वेस्ट इंडीज़ का जो यात्रा है वो आज ख़त्म हो गई। लगभग करीब 1.5 महीने मैं इस टीम के साथ रहा। पहले टेस्ट सीरीज़ मैंने कवर की। टेस्ट सीरीज़ से पहले ब्रिस्टाउन गया, जहाँ पर टीम का कैंप था। उसके बाद डोमिनिका में टेस्ट मैच को कवर किया, पोर्ट ऑफ स्पेन में कवर किया। इंडिया 2-0 से सीरीज़ जीत सकती थी, लेकिन आखिरी दिन बारिश हुई, नहीं जीत पाई। वनडे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ी सी चैलेंज किया था इंडिया को, लेकिन फिर भी इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली 2-1 जीता। T20 में उम्मीद की जा रही थी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम चैलेंज करेगी इंडियन टीम को। इंडिया को पता था कि चैलेंज करेंगे और उन्होंने किया। 2-0 से वेस्ट इंडीज़ ने लीड किया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने पलटवार किया। 2-2 से वो सीरीज़ बराबर किए और आखिरी मैच फ्लोरिडा में ऐसा लग रहा था कि आखिरी मैच में टीम इंडिया जीत सकती है और सीरीज़ जीत सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Yeah, I mean, I think you run through different formats, so sometimes it's really hard to, I think almost each format in its own way is slightly different. Obviously, very pleased with the test match. A little bit disappointed that we couldn't force a result in the second one due to rain and weather, so we lost a few points there, but I thought we played really well to get that result. The one days was good as well. We were looking to try out a few things with the World Cup and the Asia Cup coming up, a couple of big one-day tournaments coming up for us. So, I think the goals of that tournament were slightly different, what we were trying to achieve, and I was glad, I think we learned some good lessons from that one-day series and got the right result. Here as well, I think, we did well, like you said rightly, to come back from 0-2 down, and but we just couldn't sort of close out the series today. We made a few mistakes, along the way. If you look at all the 5 games, I mean, there were some mistakes that we made in the first couple of games, and even today probably we didn't bat as well as we could have. But that can happen. It's a young team, it's a developing team, so there are going to be times when we're going to have our ups and downs. Of course, we're disappointed. We would have liked to have gotten the right result of this one, and to be able to come from 0-2 down would have been very special. But credit to the West Indies. They are a good T20 side. They're playing in their home conditions. They played particularly well. Good luck to them and well done to them, and a lot of learnings for us. अब मैं जो देख रहा हूँ, रिएक्शंस देख रहा हूँ, वेंकटेश प्रसाद टीम इंडिया के पूर्व कोच रह चुके हैं, बॉलिंग कोच 2007 में, और लगातार क्रिटिकल कमेंट करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही है कि ये प्रोसेस क्या होता है। MS धोनी मीन करते थे इस वर्ड को, ये तो ऐसे ही है। तो शायद मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये आप पर है, आपकी सोच पर है। I mean, of course, you get into any series wanting to win it, so that was the first thing that we wanted to do. We didn't tick that off. We didn't tick the fact that we didn't win the series, so that was again a disappointment. But other than that, I mean, obviously there were some young guys that we wanted to trial out and give them an opportunity in the series. We gave a few debuts in the series, as you would have noted. There were other people that we tried out as well in different combinations. So from that perspective, I think there were some good positives. There were some good tick marks that we got with a couple of performances from some of the players. Some things that we can certainly look forward to the future with a lot of hope. अगर आप चाहें, जो पहले अर्लियर 2005 में ट्रेंड था मैच का मुजरिम ढूंढने का, हर हार के बाद एक विलेन ढूंढो, हमें एक विलेन ढूंढना चाहिए ताकि हम अपनी भड़ास निकाल सके, तो आपके पास है वो भड़ास निकालने का। आप हार्दिक पांड्या को, मैं देख रहा हूँ ट्रोलिंग हो रही है, इंडिया का कप्तान है। जिस हार्दिक पांड्या की कप्तानी की तारीफ करते हुए हम अघा नहीं रहे थे कि अरे फ्यूचर का कैप्टन, और हम लोग तुरंत बोल रहे थे कि इसको हटाओ उसको हटाओ। सडनली हार्दिक पांड्या ने पहली सीरीज़ हारी है, इनफैक्ट इंडिया ने पहली T20 सीरीज़ हारी है, और उसके बाद हमें लग रहा है पता नहीं कितना हमारी क्रिकेट के साथ रॉन्ग है। हम ठीक है, मैं मानता हूं हार्दिक की कप्तानी को लेकर आप वो सवाल कर सकते हैं, उनके कुछ मूव्स, कुछ फैसले, उस पर आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। ही विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि वो परफेक्ट नहीं है। आज जो उन्होंने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो आए, उनकी बातों में ईमानदारी की झलक दिखी। उन्होंने ऑनेस्टली अपने को ब्लेम किया, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने आए थे उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, तो वो एक बहुत ही ऑनेस्ट एडमिशन था उनका। दूसरी चीज़, अगर आप देखो जिस तरह से उन्होंने यंगस्टर को उन्होंने जिस तरह से प्रमोट किया, चाहे आप यशस्वी जायसवाल को उन्होंने गेंदबाजी दी या तिलक वर्मा को आखिरी लम्हे में गेंदबाजी दी, वो अपने आप में मायने रखता है। ये बातें मायने रखती है कि ये कप्तान जो है एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। हाँ, आप मायूस हुए होंगे, युजवेंद्र चहल सीनियर खिलाड़ी हैं, आज शायद
वो पैनापन नहीं दिखा। और ये अपना कुलदीप यादव विकेट ले रहे थे, आज उनके 4 ओवर में किफ़ायती रहे, विकेट नहीं मिली। टॉप ऑर्डर में जायसवाल और जायसवाल और गिल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। और एक चीज़ जो है, पहले जो मैच भारत इस सीरीज़ में हारा, पहले 12 ओवर में उनके 4 विकेट गिरे, तो टॉप ऑर्डर में वो कमी रही है, टॉप ऑर्डर में कमी रही है। लेकिन हमें साथ में नहीं भूलना चाहिए कि ईशान किशन को आराम दिया गया ताकि यशस्वी जायसवाल को मौके मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वही चीज़ कहता हूँ कि ग्लास इज ऑलवेज हाफ और फुल, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। ये I thought all the three guys who made their debuts for us in this series, stood up. Whether it was Yashasvi Jaiswal in that game, in the fourth game, I thought he played a really good innings at the top of the order. Showed his ability. He's shown us what he can do in the IPL, and it was nice for him to be able to replicate that in an international scene. Tilak Verma, I thought, was really good, to come in the middle order and came in sometimes in quite difficult situations, but every time played with a lot of intent, played very positively, looked to move the game along, fielded brilliantly throughout the series, showed us that he can bowl 1 or 2 overs as well. So really positive signs from Tilak, and to have that kind of left-hander in the middle does make a huge difference against some of the attacks that we are playing against. And then Mukesh as well. I think Mukesh is someone who debuted in all the formats in this series, but I thought he acquitted himself really well. His ability to bowl at the death. Sometimes he was called upon to bowl some really difficult overs against some really big, powerful, hard-hitting batsmen, and I thought he acquitted himself for someone who's just playing his fourth or fifth game. So I think there's some real good positives from the guys who made their debuts for us, and something that hopefully they'll take confidence from the series and keep learning as they go forward. They'll be going to Ireland and get few more opportunities in the T20 format, and then the more opportunities they get to play, I'm sure the better and better they'll get. Yes, you can be critical. आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड दैट, देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ कि जिस तरह से इस वेस्ट इंडीज़ टीम को आपने टेस्ट और वनडे में हराया, यू कैन बी क्रिटिकल कि आपको जीतना चाहिए था। 17 साल में पहली बार हम कोई सीरीज़ हारे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, ना टेस्ट वनडे T20 नहीं हारे थे, तो 17 साल में पहले। बट एट द सेम टाइम जस्ट इमेजिन वी से कि T20 में हर एक गेंद में मैच का नतीजा बदलता है। इंडिया ने पहले 2 मैच हारे, आखिरी गेंद पे हारे हैं। अगर वो सिर्फ एक गेंद, अगर इंडिया एक मैच जीत जाता तो इंडिया सीरीज जीतती थी। तो क्या मतलब हम लोग उतना ही क्रिटिकल होते? क्या सिर्फ मेयरली हार और जीत पे हम इतना ओवरली क्रिटिकल हो सकते हैं? आई लीव इट टू योर जजमेंट। बट ओवरऑल व्हेन आई लुक बैक, मैं पर्सनली बात करूंगा, व्हेन आई लुक बैक ऑन दिस सीरीज आई विल लुक बैक विद अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो क्लोज चीज़ें इस टीम को मैंने देखा प्रैक्टिस करते हुए, इनके एटीट्यूड को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, शायद ये बातें अभी आप लोगों को पता ना चले, अभी आप लोग गुस्से में होंगे, आप लोगों को लगेगा टीम को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी बातें करूँगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वनडे वर्ल्ड कप का। मैं एशिया कप में भी कुछ चीज़ें नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने इस टीम को बहुत ही क्लोजली देखा, आप लोग तक रिपोर्ट लाई है। उम्मीद करते हैं इन गलतियों से टीम इंडिया सबक लेगी और हमें जो सबसे बड़ा ट्रॉफी है, जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट है, उसमें मायूसी नहीं मिलेगी। Not so much about the World Cup in India. I think our one-day team is really different to this one and the squad that we had here. But yeah, I think in terms of the squad that we had here, probably it didn't allow us the flexibility in some ways to be able to change the combinations a little bit. But I think I think going forward, yes, we've got to look at certain areas in which we can get better. Finding depth in our batting has been an area that we're trying to address. We're trying to do as best as we possibly can. But that's certainly an area that we need to look at how we can not weaken our bowling attack but ensure that we have a certain amount of depth in batting that goes a little bit deeper. As these games are going on and scores are becoming bigger and bigger, and as you can look at even the West Indies, I mean they had Alzari Joseph coming in at number 11, and he can hit a mean ball. So you have sides which have that depth. So obviously we've got some challenges in that front. We need to work on that, and that's certainly something that this series has certainly shown us that we need to build on that depth. खैर इतनी बातें हो गई हैं, अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या हुआ, इस हार के बाद क्या सोचना है टीम इंडिया का। Hello, I'm Jay from the American College of Cricket. I might come from a different perspective because I'm from Nepal. As you know, in the coming Asia Cup, Nepal will be participating for the first time. So as you are still building your team for the World Cup, how are you looking at that game, and do you plan to try out some new players in that match, or you No, I think we have a few guys coming back from injury in any case, so we're going to have to give them opportunities to play. So no, I mean I haven't really thought about the Asia Cup, to be very honest, at this stage.
We'll have some time off. We have a camp in Bangalore from the 23rd. So we'll be assembling as a one-day team there. We'll have a week in Bangalore to prepare for the Asia Cup, and we'll take it as it comes. I'll be very honest, I haven't thought about You'll it. be back here in less than a year. The T20 World Cup is in the US and the West Indies. Your thoughts on Lauderhill, this cricket facility, the wicket here, and both the matches were played on the same pitch. Your thoughts of the kind of wicket you have seen here, just an overall assessment. Yeah, I mean, it is. It was quite a good wicket. I think, to be honest, I think 180. Both, as you can see, Both the days 180 and 165. Like I said, we were a bit under par today. Were chased quite easily. Really nice vibe, great atmosphere, lovely fans. People came out and supported. It's always great to come here and play. So can't fault the facilities, can't fault the hospitality. It was terrific. Really lovely to see the fans come out and support us. So yeah, I think it's looking forward to hopefully coming back here and playing in the World Cup.